अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रेनेसांस पीरियड के बारे में। इज़ यू नो दैट रेनेसांस पीरियड इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. It was productive and fertile with regard to poetry, drama and prose. And as we had William Shakespeare, University Weeds and many other great dramatists of English literature. पहले हम बात करेंगे कि रेनेसांस क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ये क्यों कंसिडर किया जाता है कि रेनेसांस 15th सेंचुरी में शुरू हुआ। और ये फॉर एग्जांपल वर्ल्ड में इटली में कब शुरू हुआ, फ्रांस में कब शुरू हुआ एंड जर्मनी में कब शुरू हुआ। फिर ये रेनेसांस हम देखेंगे कि 4 डिफरेंट एजेस में डिवाइडेड है, इसको सब डिवाइड किया गया है। For example, the first of which is Elizabethan Age, one of the golden ages of English literature, and then we have Jacobean period, the Jacobean Age, then Caroline Age, and then Commonwealth Age. इसके बाद फिर हम देखेंगे कि important factors या facts which influenced this age. Elizabethan Age को कौन से ऐसे वामिल थे जिन्होंने इस एज को इन्फ्लुएंस किया। एंड देन उसके मेजर राइटर्स एंड उनके वर्क्स के बारे में बात करेंगे। एंड देन यूनिवर्सिटी वीड्स के बारे में बात करेंगे, उनके वर्क्स के बारे में बात करेंगे और उनके वर्क्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। एंड देन वी विल कम टू शेक्सपियर एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द लिटरेरी फीचर्स ऑफ दिस एज। सो स्टे विद अस, दिस वीडियो इज गोना बी वेरी मच knowledgeable and useful for all of you. रेनेसांस पीरियड, अगर हम लफ्ज़ रेनेसांस की इटमोलॉजी को समझें तो ये तकरीबन 14th-13th सेंचुरी का लफ्ज़ है। इट मीन्स रीबर्थ और रिवाइवल और स्प्रेड अप अवेयरनेस एंड नॉलेज। But why do we call this period as a Renaissance period? The story is like that. For example, 1453 में एक मुस्लिम सुल्तानत उस्मानी के सुल्तान मुहम्मद द फर्स्ट, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया। कॉन्स्टेंटिनोपल उस टाइम की बिजेंटाइन एम्पायर का दारुल हुकूमत था, कैपिटल था। आज के इस्तांबुल को कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था माजी में, बट इट्स नेम चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो आजकल हम इसको इस्तांबुल कहते हैं, माजी में इसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था। सो तुर्क्स ने इस पर 1453 में हमला किया और यहाँ से बिजेंटाइन एम्पायर के जितने भी स्कॉलर्स थे उन्हें निकाल दिए। सो जो स्कॉलर्स यहाँ से निकल गए वो यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में डिस्पर्स हो गए। सम वेंट टू इटली, द अदर्स वेंट टू जर्मनी, फ्रांस एंड सम लेटर केम टू इंग्लैंड। जब वो इंग्लैंड आए तो उन्होंने अपने पास नॉलेज लेके आए। उस नॉलेज को उन्होंने स्प्रेड करने की कोशिश की। इस नॉलेज की स्प्रेड को, वो जो नॉलेज उन्होंने स्प्रेड किया वो क्लासिकल एजुकेशन था। सो इस स्पिरिट्स की वजह से रिवाइवल हुआ, मीन्स के रीबर्थ हुआ लर्निंग का। इस रीबर्थ को हम कहते हैं रेनेसांस। सो द रेनेसांस बिगिन इन 1453, its effect on English life and literature was felt up till 1500। इवन कि 1453 में रेनेसांस शुरू होता है, बट इसका इफेक्ट जो है इंग्लिश लाइफ में या इंग्लैंड में 1500 के बाद फील किया गया। सो देन वी कैन से दैट रेनेसांस स्टार्टेड इन इंग्लैंड आफ्टर 1500 या आफ्टर 15th century. Now, for this reason, it is generally accepted that the Renaissance period began with the beginning of the 16th century and continued till the Restoration in 1660. इस वजह से ये यकीन किया जाता है कि रेनेसांस जो है 16th सेंचुरी के स्टार्ट से, मीन्स कि जैसी 15th सेंचुरी मुकम्मल हुई
16वीं सेंचुरी स्टार्ट होने लगी तो रेनेसांस शुरू हुआ और ये 1660 तक जारी रहा. दिस पीरियड इज कॉल्ड रेनेसांस. ये पीरियड रेनेसांस इसको कहते हैं बिकॉज the Renaissance spirit was the main driving force that characterized the literature of this period. अभी इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि रेनेसांस की जो स्पिरिट थी, स्पिरिट कौन सी थी? द स्पिरिट लर्निंग, पेट्रियोटिज्म, respect for women, the spirit of knowledge. These were the characteristics of Renaissance, which characterized this period. Therefore, we call it Renaissance period. So, ये पीरियड जो है 160 years पर मुश्तमिल है. And it is subdivided into 4 shorter ages after the names of the political rulers. इस पीरियड को जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, 4 एजेस में या पीरियड्स में. सो अपने फॉर एग्जांपल जिस रूलर ने जब मीन्स के फॉर एग्जांपल जब से रूल किया, कब से रूल किया, कब तक, उसके नाम से वो एज जाना जाता है. फॉर एग्जांपल क्वीन एलिजाबेथ जो है, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने 1558 से लेकर 1603 तक वो क्वीन रही. सो इस एज को हम कहेंगे कि एक एलिजाबेथन एज. फिर इसके बाद जेम्स वन या जेम्स द फर्स्ट रूल्ड फ्रॉम 1603 टू 1625. इस एज को हम कहते हैं जैकोबिन पीरियड, जैकोबिन एज. And then we have Caroline Age, which starts with 1625 and ends in 1649. ये यहाँ पे चार्ल्स वन रूल करता है. And then we have a Commonwealth period, which starts in 1649 and ends in 1660. So these were the ages that we will be discussing. We will be discussing Elizabethan age, its characteristics, its major writers, and their works, as well as the literary features of this age. So, if we talk about the Elizabethan age, it starts in 1588 and ends in 1603. This age is named after Queen Elizabeth I, who reigned over England from 1558 to 1603. इस एज को गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. द एलिजाबेथन एज इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. अब भी हम वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जिसने इस एज के लिटरेचर पर ज़्यादा असर किया. The first one and the very important one is that with the accession of Queen Elizabeth I to the throne, dynastic problems and political troubles came to an end. जब क्वीन एलिजाबेथ क्वीन बन गई तो उस टाइम में जो डायनेस्टिक प्रॉब्लम्स थे, मीन्स के इस चीज़ पर झगड़ा था कि who will become the king or the queen, ये प्रॉब्लम ख़त्म हुआ. And secondly, religious and social stability brought about national prosperity. एक चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी कि चर्च की रिफॉर्मेशन तो वैसे चार्ल्सर की एज में जॉन वैकलिफ ने शुरू किया था, जब उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया लैटिन से इंग्लिश में. लेकिन फिर मार्टिन लूथर, zwingli एंड कैल्विन उन्होंने पोप के ख़िलाफ़, जो रोम में पोप बैठता था उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू किया. फिर हेनरी द एट्थ आया, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया. सो दैट इज़ वाई देन इंग्लिश की जो क्रिश्चियनिटी जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई. प्रोटेस्टेंट्स वर द वंस हु वर सपोर्टिंग Martin Luther, not King Martin Luther, Martin Luther and Henry the Eighth, and Catholics were the ones who were supporting the
the Pope. So there was a clear divide between the two sects of Christianity. बट जब क्वीन एलिजाबेथ आई तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई. ये प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व हो गई यहाँ इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा. द रिलीजियस रिफॉर्मेशन इंस्पायर्ड रिलीजियस टॉलरेंस एंड सेकुलरिज्म. जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन आई, be it through, for example, the endeavors of Queen Elizabeth, that of Martin Luther of Germany, and Zwingli and Calvin of Switzerland. जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि रिलीजियस स्टेबिलिटी आई, वो इस तरह है कि एलिजाबेथ द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंग्लिकनिज्म टू सेटल रिलीजियस प्रॉब्लम्स. एलिजाबेथ द फर्स्ट ने एंग्लिकनिज्म इंट्रोड्यूस किया रिलीजियस प्रॉब्लम्स को सेटल करने के लिए. अभी एंग्लिकनिज्म क्या है इसको हम नीचे देखेंगे, पहले वो मसला देखेंगे कि असल में बात क्या थी. इट इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, इसकी एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है. इन द 16th century, Martin Luther of Germany and Zwingli and Calvin of Switzerland protested against the autocracy of the then Pope. 16th century में मार्टिन लूथर, Zwingli and Calvin, मार्टिन लूथर जर्मनी से था, Zwingli and Calvin स्विट्ज़रलैंड से थे. उन्होंने पोप के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. उन्होंने प्रोटेस्ट किया पोप के खिलाफ. Those who supported them were called Protestants. जिन्होंने मार्टिन लूथर एंड Zwingli एंड कैल्विन को सपोर्ट किया, वो प्रोटेस्टेंट्स, उनको प्रोटेस्टेंट्स कहलाने लगे. And those who still supported the Pope were called the Papists or the Catholics. और जिन्होंने पोप को सपोर्ट किया उनको या तो पेपिस्ट के नाम से पुकारा जाता था या कैथोलिक्स. मीन्स कि there was two, Christianity by now was divided into two sects या schisms. One was Protestant and the second was a Catholics. उस टाइम पर जो किंग थे, Henry VIII was the king of England during those years, supported Protestantism for his personal advantages. Henry VIII ने भी प्रोटेस्टेंटिज्म को सपोर्ट किया अपनी ही मुफादाती एडवांटेजेस के लिए. उसको क्या एडवांटेजेस थे? He wanted to divorce his first wife Catherine. वो अपनी फर्स्ट वाइफ कैथरीन के साथ शादी करना चाहता था. एंड मैरी एनी बोलियन, वो एनी बोलियंस के साथ शादी करना चाहता था. सो अगर मैं आपको अगर क्रिश्चियनिटी के इस रूल के बारे में नहीं पता, ये फास्ट में इट वाज लाइक दैट. फॉर एग्जांपल कि एक बंदा जो है ना एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता था. मीन्स अ पर्सन कुड नॉट मैरी सेकंड टाइम. देयरफॉर Henry VIII was denied by the king to get married for the second time. So he got angry at him and he protested against him. And he married Anne Boleyn and introduced Protestantism to England. So Henry VIII was the person who brought Protestantism to England. Some of the people accepted the king's religious authority, but the rest followed the Pope's rule. मीन्स कि यहाँ पे भी क्लियर डिवाइड है कि कुछ लोगों ने किंग को सपोर्ट किया एंड कुछ लोगों ने पोप को. दिस कास्ट अ ब्लडी सिविल वॉर विच कंटिन्यूड टिल 1558. इसकी वजह से सिविल वॉर हुआ और ये सिविल वॉर 1558 तक जारी रहा. देयर क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट केम टू पावर. सो जब क्वीन एलिजाबेथ मीन्स के क्वीन बन गई. This religious she understood the problem and introduced Anglicanism. उन्होंने प्रॉब्लम को समझते हुए एंग्लिकनिज्म इंट्रोड्यूस किया. या फिर मैंने ऊपर बताया था कि एंग्लिकनिज्म उन्होंने सेटल किए हैं यहाँ पे. अब एंग्लिकनिज्म क्या है? एंग्लिकनिज्म मीन्स इंग्लैंड्स ओन चर्च. अभी इससे क्या मतलब है कि इसे आप इस तरह समझे कि पहले जो चर्च हुआ करता था, मीन्स के द बिगेस्ट द सेंट्रल चर्च,
इट यूज टू बी इन रोम। ये रोम हुआ करता था और वहाँ पे एक पोप बैठता था, एंड पोप वॉज ऑल पावरफुल। उसके पास सब पावर था। ही कुड डू एनीथिंग। ही हैड political, social, religious, cultural, and every authority. सो क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लैंड का एक अपना नेशनल चर्च इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ा सेटल हो गया। दिस रिलीजियस सेटलमेंट ब्रॉट अबाउट स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी टू इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। फिर इस वजह से, इस रिलीजियस सेटलमेंट की वजह से इंग्लैंड में प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी आई। सेकेंड, फोर्थ जो था इसका फीचर है, मीन्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसने इस एज के लिटरेचर को पर असर किया है। द जियोग्राफिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज of the previous decades brought about ultimate fortune during this period. जो जियोग्राफिकल या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज हुए थे, उनकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त कैपिटल या परचून आया इंग्लैंड में। अभी जियोग्राफिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज क्या थे? फॉर एग्जांपल, वास्को डा गामा केम टू इंग्लैंड to India in for 1914-98. Vasco da Gama. Columbus reached America in 1962, 1922, 1492, and Vasco da Gama, for example, was the person. And along this, we have Copernicus, who said that the sun is the center of the universe. So this kind of discoveries really brought fortune to England. ये सारे फैक्ट्स मैंने पिछली वीडियो में दिए हैं। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, आप उस वीडियो के देखें, उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक या द फिफ्थ इफेक्ट इज दैट रेनेसांस एट दैट इट स्टार्टेड अर्लियर। असल में रेनेसांस दैट वाज स्टार्टेड अर्लियर इज असल में ये पहले बात इस तरह है कि रेनेसांस असल में पहले इटली में शुरू हुआ था, and then it came to, for example, France, and then Germany, and then Spain, and then England. So रेनेसांस जो पहले कुछ और कंट्रीज में शुरू हुआ था, अभी इसके 16th सेंचुरी के स्टार्ट में इंग्लैंड में भी फील हुआ। It brought ancient Greek and Roman wisdom to England. मीन्स के ग्रीक एंड रोमन जो एजुकेशन था वो यहाँ पे पहुँचा। इरास्मस रीच्ड इंग्लैंड। इरास्मस इंग्लैंड पहुँचा, उन्होंने जॉन कोल्ट के साथ उन्होंने ह्यूमनिज्म और रेनेसांस के अदर आइडियल्स पर काम किया। सिक्स्थ ये है कि द सोशल लाइफ ऑफ इंग्लैंड वाज मार्क्ड विद स्ट्रॉन्ग नेशनल स्पिरिट, ह्यूमनिज्म, लिबरल रिलीजियस व्यूज, scientific curiosity, ancient social content, intellectual progress, and unlimited enthusiasm. Social life में स्पिरिट में क्या थे? नेशनल स्पिरिट मीन्स के पेट्रियोटिज्म, ह्यूमनिज्म भी थे, और लिबरल रिलीजियस व्यूज तो तब शुरू हुए जब उन्होंने एंग्लिकनिज्म इंट्रोड्यूस किया क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, मीन्स के लोग साइंटिफिक, यहाँ पे साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगे। सो पीपल बिकेम क्यूरियस अबाउट साइंस एंड इट्स डिस्कवरीज। सोशल पीपल वर socially satisfied, intellectual progress, and unlimited enthusiasm were the important features, social features of this period. अभी हम इस एज के डिफरेंट राइटर्स को देखेंगे और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को देखेंगे। द फर्स्ट मेजर राइटर दैट वी हैव ऑफ दिस पीरियड इज थॉमस मोर, सर थॉमस मोर। ही वाज बोर्न इन 1478 and died in 1535. He is written the well-known work Utopia, which means a place or a realm or a country or a place where everything is perfect.
या अ किंगडम ऑफ नोवेयर, क्योंकि इस तरह परफेक्ट जगह तो कहीं पे भी नहीं मिलते जहाँ पे हर चीज़ से परफेक्ट हो. दिस बुक was originally written in Latin in 1516. ये बुक असल में लेटर में लिखा गया था 1516 में. And then the second two writers that we have is Norton and Sequel. These two writers are very much important for a literary student to know, because उन्होंने एक प्ले लिखा है, ट्रेजेडी लिखा है, इसका नाम है गार्बोडक्ट. कार्बोडक्ट इज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी. इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश लिटरेचर में कार्बोडक्ट पहली ट्रेजेडी है जो नॉर्टन एंड सेक्विल ने लिखी है. सो नॉर्टन वाज बोर्न इन 1532 and died in 1584, and Sequel was born in 1536 and died in 1608. And then we have Edmund Spenser. Edmund Spenser बहुत ही important poet है. He was born in 1552 and died in 1599. He is called the poet of poets, या the poet's poet. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसका टाइटल है, इसको कहा जाता है कि द पोएट ऑफ पोएट्स या द पोएट्स ऑफ पोएट, द पोएट्स पोएट, बिकॉज मैनी लेटर इंग्लिश पोएट्स फॉलोड इज आर्ट ऑफ पोइट्री. क्योंकि मीन्स के इसके स्कूल ऑफ थॉट से बहुत से लोग थे, या इसके जो पोइटिक पैशन थे उसके बाद उनके डेथ के बाद बहुत से राइटर्स ने उन्हें फॉलो किया. उन्होंने एक वर्क लिखा है द फेरी क्वीन, और इसी के साथ द शेपर्ड्स कैलेंडर भी एडमंड स्पेंसर का वर्क है. फोर्थ राइटर हमारे पास है निकोलस ऑडल. निकोलस ऑडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगेन उन्होंने एक कॉमेडी लिखी है, रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर. दिस इज़ द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी. ये इंग्लिश में फर्स्ट कॉमेडी है. सो यू सा गार्बोडक्ट इज द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन बाय सेक्विल एंड नॉर्टन इन इंग्लिश, एंड रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर is the first English comedy. And then we come to Sir Philip Sidney. Sir Philip Sidney is considered to be the first critic of English language. Or you can say it was the credit of that goes also to John Dryden. But Sir Philip Sidney has written an apology for poetry, which is a critical treatise, as well as Arcadia, which bears the fingerprints or the indications of English novel, of modern novel. So he was born in 1554 and died in 1586. इसके बाद हम जॉन लेली के बारे में बात करेंगे. जॉन लेली इज़ अ यूनिवर्सिटी वीट. वो यूनिवर्सिटी वीट है. इस यूनिवर्सिटी वीट को समझने के लिए हम नीचे बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी वीट है क्या. बट उन्होंने एक वर्क लिखा है कंपेस्प, ये कंपास्प. इट वॉज रिटन इन 1584. सेपो एंड पाहो, इट वॉज रिटन इन 1884. मिडास 1589. इप्यूस 1579. इप्यूस भी एक ऐसा वर्क है जिसमें मॉडर्न नावल के कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं. इसके बाद थॉमस किड या थॉमस काइड. he was born in 1557 and died in 1595. ये भी एक यूनिवर्सिटी वीट है. इसका इम्पोर्टेंट वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी, फॉर विच ही इज़ नोन. रॉबर्ट ग्रीन, ये भी एक ड्रामाटिस्ट है और इन्हें भी यूनिवर्सिटी वीट में इसको काउंट किया जाता है. फ्रेड बैकन एंड फ्रेड बंगे, इसका एक इम्पोर्टेंट वर्क है. इसी के साथ जेम्स फोर्ड, उन्होंने 1591 में लिखा है. And then we come to George Peele. He is another dramatist
He also belongs to the School of University Wheat. David and Bathsheba is important work which was written in 1599. And then we come to the Arraignment of Paris. ये भी एक उसका एक ड्रामा है जो कि 1584 में लिया गया था. Now we describe the University Weeds. University Weeds were a group of dramatists who wrote and performed in London towards the end of the 15th century. यूनिवर्सिटी वीड्स एक ग्रुप ऑफ यंग ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने 15th सेंचुरी के एंड पे इंग्लिश लैंग्वेज में ड्रामास लिखे या प्लेज लिखे. इनको यूनिवर्सिटी वीड्स क्यों कहा जाता है यूनिवर्सिटी वीड्स? बिकॉज दे वर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड. ये 6 जो ड्रामेटिस्ट हैं ये या तो ऑक्सफोर्ड, इनमें से कुछ ऑक्सफोर्ड या कुछ कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स थे. इस वजह से इनको यूनिवर्सिटी वीड्स कहा जाता है. सो इनमें से ये कौन थे? मीन्स के कितने नंबर में थे? 6 थे. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वन इज एंड द मोर इम्पोर्टेंट वन इज क्रिस्टोफर मार्लो, and then we have Thomas Kidd, and then we have Nash, and then we have Robert Greene, and then we have Lilly, and then we have Lodge and Peel. So these were the members of this group who upheld the classical ideals and ridiculed the crudeness of New English plays. So फ्रांसिस बेकन के बारे में अगर हम बात करें, so फ्रांसिस बेकन is called to be a natural philosopher as well as the first essayist of English language. उन्होंने एक अपने इसेज लिखे हैं, टाइटल भी उसका इसेज है 1597. And then we come to Christopher Marlowe, who saw to be a member of the University Weeds. His works include Timberland the Great, Part 1 and Part 2, जिसको उन्होंने 1587 या 88 में लिखा है. The Jew of Malta 1589, and Edward II 1591. And then we come to Dr. Faustus, which is one of his well-known dramas, and that is written in 1592. And then we come to William Shakespeare, the greatest dramatist of English language. He was born in 1564 and died in 1616. शेक्सपियर को इंग्लिश का जो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कहा जाता है. So he is famous for the objective presentation of his deep knowledge about human psychology. मीन्स कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में डीप नॉलेज रखते थे, और एज वेल एज ही हैज रिफ्लेक्टेड ह्यूमन नेचर इन हिज plays through his characters. He is often called the Bard of Avon. उनको Bard of Avon भी कहा जाता है. Why? Because he was born in Avon. That is why he is called the Bard of Avon. Now, Shakespeare is written 37 plays and 154 sonnets. शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं और इसी के साथ साथ 37 प्लेस भी लिखे हैं. So out of this 37 plays, he wrote the following 25 before the death of Queen Elizabeth I. मीन्स के क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के एज में उन्होंने 25 ड्रामास लिखे. बाकी जो 12 बचते हैं वो उन्होंने जो सेकंड है जाएगा जो 1603 से लेकर 1625 तक होगा, जैकोबियन पीरियड, उन्होंने उसमें बाकी 12 ड्रामास लिखे हैं, प्लेस लिखे हैं. सो शेक्सपियर के प्लेस के नाम्स ये हैं: हेनरी द सिक्स्थ पार्ट 1, हेनरी द सिक्स्थ पार्ट 2, हेनरी द सिक्स्थ पार्ट 3 एंड रिचर्ड. ये फॉर एग्जांपल ये हेनरी के बारे में हिस्टोरिकल प्लेस हैं, ये उन्होंने 1591 से 92, ये सारी 1591 से 92 हैं. सो ये 3 पार्ट्स हैं. फिर रिचर्ड द थर्ड के बारे में ये भी हिस्टोरिकल प्ले हैं, ये उन्होंने 1593 में लिखा है. द कॉमेडी ऑफ एरर्स 1593,
Titus Andronicus, 1594. The Taming of the Shrew, 1594. Love's Labour's Lost, 1594. Romeo and Juliet, 1594. The Midsummer Night's Dream, 1595. The Two Gentlemen of Verona, 1595. King John, 1595. Richard II, 1596. And then we come to the Merchant of Venus, 1596. Henry the Fourth, Part 1, 1597. Henry the Fourth, Part 2, 1598. And then मच अडू अबाउट नथिंग, जो कि उन्होंने 1598 में लिखा है। हेनरी द फिफ्थ, ये भी हिस्टोरिकल प्ले हैं 1599 में। जूलियस सीजर 1599। द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर 1600। इज यू लाइक इट 1600। एमलेट 1601। द ट्वेल्थ नाइट 1601। ट्रायलस एंड क्रिसिडा 1602। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल 1602. So these were the 25 dramas or plays that he wrote during the Elizabethan period. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है. फॉर एग्जांपल यू जस्ट sit in the competitive exam that which drama was written in whose age, कि किसके पीरियड में या किसकी एज में कौन सा ड्रामा लिखी गई थी. So you have to just keep it in mind that these 25 plays were written during the Elizabethan period. And then we come to Thomas Nash. He is also a university wit, and he has written the work of The Unfortunate Traveler in 1594. He was born in 1567 and died in 1601. And then हम बिन जॉनसन के बारे में बात करते हैं. बिन जॉनसन के बारे में कुछ means कि it is something strange about him. He was born in 1573 and died in 1637. अभी इससे ये लगता है कि वो जाहिर सी बात है रेनेसांस में ही पैदा हुआ है, बट इज़ अ न्यू क्लासिस्ट. इसको न्यू क्लासिकल पोइट कहा जाता है बिन जॉनसन को. although he wrote in the time when the romantic mood of literature was prevalent. इवन कि उन्होंने इस टाइम में लिखा जब रोमांटिक मूड ऑफ लिटरेचर जो था इट वाज करंट. अभी रोमांटिक मूड से हमारा क्या मतलब है? द फर्स्ट, अगर आपको नहीं पता, द फर्स्ट रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड द एलिजाबेथन एज. फिर इसके बाद जो फॉर एग्जांपल 1799-98 में जो पीरियड आता है रोमांटिक पीरियड का, वो रिवाइवल है, मीन्स की रीबर्थ, दोबारा. सो एलिजाबेथन पीरियड इज कॉल्ड टू बी the real romantic period of English language and English literature. So he is said to be born in Renaissance, but he is written in the style of the classicals. That is why he is called neoclassicist. He is called a neoclassicist because he followed the classical rules of drama, क्योंकि उन्होंने क्लासिकल रूल्स ऑफ ड्रामा को फॉलो किया. अभी क्लासिकल रूल्स ऑफ ड्रामा क्या है? जब हम न्यू क्लासिकल पोइट्री या न्यू क्लासिकल ड्रामा के बारे में, मीन्स के न्यू क्लासिकल एज के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे. सो इसके इस इम्पोर्टेंट पीरियड में उन्होंने 2 वर्क्स लिखे हैं, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. बाकी इनके जो बाकी वर्क्स हैं या जितने भी राइटर्स के बाकी वर्क्स हैं वो जिस पीरियड में लिखी होंगी उसी पीरियड में हम इसको डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल शेक्सपियर ने बाकी जो प्लेज हैं वो उन्होंने जैकोबिन पीरियड में लिखे हैं. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम इन द जैकोबिन पीरियड एंड द लेक्चर अबाउट जैकोबिन पीरियड and as well as the plays of Ben Jonson whose play also come in the Jacobin period. So then last but not the least we have Beaumont and Fletcher. ये 2 ड्रामाटिस्ट थे. Philaster and King and No King were the plays that both of these writers wrote. And the Maid's Tragedy was also one of the tragedies that
This gentleman wrote. अभी हम बात करेंगे मेन लिटरेरी फीचर्स ऑफ दिस एज, कि वो कौन से लिटरेरी फीचर्स थे, वो कौन से अदबी खसूसियात थे जिनकी वजह से इस एज पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा. द फर्स्ट वन इज़ Elizabethan literature reflects a great variety of creative genius. इसमें तो शक नहीं है कि एलिज़ाबेथन पीरियड जो है वो लिटरेचर में ज़बरदस्त जीनियस, क्रिएटिव जीनियस में इंग्लिश लिटरेचर को देती है. फॉर एग्जांपल, in the shape of uh, William Shakespeare is one of the best dramatists in the world, as well as Christopher Marlowe and Johnson and the university is following him. And then the second point is that it demonstrates experimentation and innovation in dramatic and poetic forms and techniques. इससे पहले अगर आपको को ड्रामा की हिस्ट्री का पता हो तो ड्रामा पहले मिरेकल प्ले होते थे, मिस्ट्री प्ले होते थे, एंड एज वेल एज मोरलिटी प्लेज होते थे, इंटरल्यूड होते थे. But it was only Elizabethan period that a tragedy was written, a comedy was written. So it was not written before in English. This was the first period in which the writers tried to write in the form of tragedies and comedies. So comedies and tragedies replaced medical plays, morality plays, mystery plays, and interludes, in which the saints, Bible, and the moral stories would be the themes of the drama, the miracle, morality, and mystery plays. So the dramatic innovation was and poetic form. Dramatic innovation was very surprising for most of them, and then poetic forms में भी change आया. Means कि for example rhyming scheme में change आया, illustration को का use करना छोड़ दिया जो कि middle ages में use होता था, and much more things. इसके बाद अगर हम बात करें तो it is deeply influenced by the Renaissance period, especially by the Renaissance of literature of Italy, France and Spain. ये रेनेसांस की स्पिरिट से बहुत ही इस पे असर है, और स्पेशली दैट ऑफ इटली, फ्रांस एंड स्पेन, क्योंकि पहले इटली में मैंने कहा कि शुरू हुआ है, फिर फ्रांस में, एंड देन इट केम टू स्पेन, एंड देन इट केम टू इंग्लैंड. Its style exhibits romantic exuberance. Its style exhibits means कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स ज़्यादा थे इसमें, इमेजिनेटिव थे राइटर्स, इमोशन से प्ले करते थे. सो नेचर के बारे में बात करते थे. सो दिस वर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैरेक्टराइज दिस पर्टिकुलर एज. मीन्स कि इट वाज द पास्ट. अगर आप ये नोट कर ले, सो इट विल बी 100% correct that the Elizabethan period is said to be the first romantic period in English literature. But the very surprising fact about this um, period is that there was no woman writer at all. All the writers were men from all classes of society. इसके बाद it is an age of exquisite poetry, unparalleled drama and splendid prose. If you talk about literature, means if you talk about poetry, it was one of the best periods. If you talk about drama, it is unparalleled and it cannot be compared with any other period, because Shakespeare's genius and the plays of Shakespeare cannot be compared with any dramatist of today or yesterday or tomorrow. So as well as prose was also the foundations of prose were also being established with very strong and prowess. इसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है, it marks a shift from a man's fate to his free will.
इससे पहले क्योंकि रिलीजन का बहुत ही ज़बरदस्त ओल्ड था, क्रिश्चियनिटी का बहुत ही ज़बरदस्त ओल्ड था मासेस पर। सो लोग फेथ पर यकीन रखते थे, बट व्हेन दे गॉट एजुकेटेड बाय द एंशिएंट ग्रीक्स एंड रोमन्स, they started to believe in free will and discarded fate. Then इसके बाद it develops English language to the level of stable standard. नाउ इसके बाद अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हमने इंग्लिश के लेवल के बारे में बात की थी कि इंग्लिश लेवल का मीन्स कि व्हाट वाज द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बट व्हेन वी कम टू दिस पीरियड इट बिकम्स स्टेबल and it is written इसमें बहुत सी ड्रामाज मीन्स के बहुत से plays and poems and prose works लिखे हुए हैं. For example, Shakespeare used it in all his plays and sonnets, and university reads besides Thomas More, who just wrote Personal Latin. All the other writers wrote in English language. So this gave English language a stable foundation to be founded on. Um, and then its spirit ranges from Platonic idealism of the delightful romance to the level of gross realism. The ninth point of this literary features of this age is कि यहाँ पे दो चीज़ें थी. ग्रोस रियलिज्म भी था, मीन्स के some writers were very realistic, जो देखते थे उन्हीं को पोर्ट्रे करते थे. And some were very ideal and they would just become imaginative and for example make their own word. अगर हम बात करें एटोपिया के बारे में तो उन्हीं में इसी तरह बात हुई है कि अब परफेक्ट वर्ड है जहाँ पे ना कोई गम है, everything is pleasurable and it gives pleasure, there are no worries. So इस तरह idealism भी था. The literature of this age shows a quest for the remote, the wonderful, and the beautiful. So it is again one of the romantic features of this age, that it shows a quest for the remote, means कि जो चीज़ें फार हो, नेचुरल हो, वंडरफुल हो एंड ब्यूटीफुल हो, इनके लिए इनको क्वेस्ट था. Secondly, it reflects the original romanticism that revived during the beginning of the Romantic Age in 1799. So it is the first Romantic period in English literature, which was revived in 1799. मीन्स के एलिजाबेथन एज जो है वो फर्स्ट रोमांटिक पीरियड है, और इसकी रिवाइवल कब हुआ, इसका रिवाइवल दोबारा कब हुआ, वो 1799 में हुआ, जिसको हम रोमांटिक एज कहते हैं. ट्वेल्थ एंड लास्ट, इट इनिशिएट्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म. जैसे कि मैंने कहा था कि फिलिप सिडनी का जो वर्क है इन अपोलोजाई फॉर पोइट्री, इट वाज अ क्रिटिकल treatise, so with it begins literary criticism. So this was all about today. See you in the next video. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें.